गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड हाउ आर यू? राइट, टुडे we'll first go through a few issues of the five paths for China. एक ये जो I got a very interesting article which I read. Actually, I had read it long back, but I rediscovered it, or I thought, let me share it with everyone. And then, of course, I'll take on all your questions which you have and whatever you want to answer on any other subject, right? But this is a very interesting, article which I thought I'll share with you. This is written by someone called Michael Pettis, and he wrote it for the Carnegie Center. ये लिखा 2-3 साल पहले ही है, पुराना आर्टिकल है, बट इसके अंदर जो डेप्थ है दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू वेयर चाइना इज हेडिंग, राइट? So just have a look at it, right? Michael Pettis wrote this for the Carnegie Endowment. The only 5 paths China's economy can follow. And what does he say in the top? There is increasingly a consensus in Beijing that China's excessive reliance on surging debt in recent years has made the country's growth model unsustainable. ये सबको पता है उनको कि ये जो कर्ज उन्होंने लिया है and the debt fueled infrastructure based growth is not sustainable, right? तो इस लिहाज से इसने 5 पाथ दिया है, बट बेसिक थिंग इसने एक इन द preamble to his 5 paths he's written this: higher GDP for China doesn't mean a better economic outcome than lower GDP. GDP से हम सब सोचते हैं जीडीपी का, इफ जीडीपी चाइना हैज अ बेटर जीडीपी वो अच्छा है चाइना के लिए, और वो मतलब वो नंबर 1 है। नहीं, ये इसके मुताबिक हायर जीडीपी हो या लोअर जीडीपी कुछ फर्क नहीं पड़ता। It just means that the authorities were more willing to employ resources for creating economic activity, whether or not that activity is productive or sustainable. आप कोई भी एक्टिविटी करो वो जीडीपी में इजाफा होता है। पर बात मैं हर वक्त जो बोलता रहता हूँ आप हम सब लोगों को कि योर एक्टिविटी हैज टू बी प्रॉफिटेबल एंड बेटर फॉर द पीपल। इफ दैट इज नॉट देयर देन दैट जीडीपी इज यूजलेस। एंड चाइना में क्या है कि बहुत जीडीपी जो है वो यूजलेस जीडीपी है। A better economic outcome for China is not more GDP growth, but more genuine growth and less inflated growth. दो चीजें इसमें इसने दिया, that it should be more genuine, less inflated. That's what he is saying. And whereas the worst outcome is the opposite. Right. Why have I chosen Michael Pettis? I mean, है कौन ये? Michael Pettis teaches in Tsinghua University. पिछले 10 साल से he is teaching in Tsinghua University. He is affiliated with most think tanks. And as far as the property, real estate, and economy, that part of the economy, he is considered a global expert, right? And everyone, even Nobel laureates, quote him. That is why I got this article, which is actually a beautiful article, and I'm quoting him. So, main thing kya hai कि higher GDP will not give you better outcomes than a lower GDP, and higher GDP or any GDP has to be genuine and not inflated. That's the thing in this preamble. And what is important is that this is what Xi Jinping says, of all people. What does he say? He says, I said that we needed to shift the focus to improving the quality and returns of economic growth, to promoting sustained and healthy economic development. So, main kya hai? He's talking of quality, returns of economic growth. He's talking of sustained and healthy economic development, and to pursuing genuine rather than inflated GDP growth.
ये जी जिनपिंग को भी पता है कि इन्फ्लेटेड ग्रोथ हो रहा है अपने देश में, ठीक। And achieving high quality, efficient, and sustainable development is the crux of the whole story. And ये ऐसी ये नहीं है, ये जो आर्टिकल है ये इनके एक ऑफिशियल चाइना का वेबसाइट में पब्लिश हुआ है 5-6 साल पहले। देखिए, जी जिनपिंग कोई बेवकूफ आदमी नहीं है कि उसको पता नहीं कि उसको देश में क्या हो रहा है, पर फिर भी ऐसे चल रहा है, राइट। वो क्यों चल रहा है वो उसके अलग कारण है, राइट। एक्चुअली वो फंस चुके हैं, वो किस कितना बुरी तरीके से फंस चुके हैं आपको ये जो 5 बात है इससे पता चल जाएगा। ये माइकल पेटिस ने जो लिखा है, एज पर माइकल पेटिस, चाइना कैन स्टे ऑन इट्स करंट पाथ एंड कीप letting large amounts of non-productive investment continue driving the country's debt burden up indefinitely. So that's the first path. जो हो रहा है उसको चलने दीजिए। Second path, China can reduce the large amount of non-productive investment on which it relies to drive growth and replace it with productive investment in forms like new technology. So take non-productive out, put new technology in, and this is what this is what Xi Jinping is trying. यही इसका ये है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर। Number 2 path, China can reduce the large amount of non-productive investment on which it relies to drive growth and replace it with rising consumption. अगर लोग कंज्यूम करेंगे तो the GDP will go up automatically. The fourth path is China can reduce the large amount of non-productive investment on which it relies to drive growth and replace it with a growing trade surplus. इसका मतलब export ज़्यादा. Last point, China can reduce the large amount of non-productive investment on which it relies to drive growth and replace it with nothing. कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, बंद कर दो. In which case growth would necessarily slow sharply. ठीक, मोटा मोटा ये 5 आते हैं. इसके अलावा और कोई there's no other way out for China other than these paths. And it's very stark. And it is not as if the Chinese do not know. They know it fully well and they're attempting this. The question is, can they make it happen? Okay, well, let's see the first path. What's the first path? Can China keep doing what it has been doing so far? क्या कर सकता है? जारी रखो इसी को, यही कहानी. For China to stay on its current path of high level growth fueled by non-productive investment, the country would need to allow a persistent, indefinite increase in its debt burden. सब कर्जे में, इसका लोकल गवर्नमेंट भी कर्जे में डूब जाएंगे, लोगों को भी कर्जे में डूबना पड़ेगा, पूरा गवर्नमेंट को भी डूबना पड़ेगा. इसका मतलब सिर्फ कर्जा का गुब्बारा बढ़ता जाएगा. दिस इज नॉट सस्टेनेबल. ये जारी नहीं रख सकते. Right? Okay, what is the second path? China can replace non-productive investment with productive investment. वही टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिव. बट इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी इज अ हाई रिस्क सेक्टर. ये प्रोडक्टिव होगा या नहीं पता नहीं किसी को. और ऊपर चाइना ने चिप के ऊपर पाबंदी लगा दिया और हाई टेक्नोलॉजी चाइना को मिल नहीं रहा. तो whether technology will make it productive, Xi Jinping's endeavor in space and cyber वगैरह वगैरह, क्या ये productive होगा पता नहीं. So what does Michael Pettis say? Beijing could bring debt under control while maintaining high growth rates by replacing non-productive investment with investment in more productive economic sectors. जो मैंने बताया, technology, basically technology. Chinese authorities have been proposing this for many years as the most likely path to follow, but they have been unable to fulfill these promises.
Why? ये to follow this path of high technology, you need private sector. और जी जिनपिंग ने प्राइवेट सेक्टर को तोड़ दिया. आफ्टर ऑल जो अलीबाबा, टेंसेंट, म्यूटियन, दीदी, ये सब क्या थे? टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, प्राइवेट बट टेक्नोलॉजी, उसने तोड़ दिया. अभी दोबारा वो प्राइवेटाइज करना चाहता है, क्या कर पाएगा? यही क्वेश्चन मार्क है. 2007 से ये ट्राई कर रहे हैं. China can replace non-productive investment with rising consumption, or rather, can China replace non-productive investment with rising consumption? कंजम्पशन की जरूरत है, दैट इज आम लोग ज्यादा खर्च करें, वो ट्राई कर रहे हैं, वो वॉचर दे रहे हैं, सबको प्रॉपर्टी का मॉर्गेज सस्ता कर रहे हैं, लोन सस्ता कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि भाई लोन ले लो. वो मैं कल भी मैंने जारी किया था. सो राइट, बीजिंग कैन ब्रिंग debt under control while maintaining high growth rates by replacing non-productive investment with a rising consumption share of GDP. जैसे हमारे देश में कंजम्पशन है. This is what Beijing has been proposing since at least March 2007. 2007 से ये दोनों ट्राई कर रहे हैं. ऑलरेडी 16 साल हो गए पर हो नहीं पाया. राइट? उस वक्त के प्रीमियर वेन जियाबाओ ने अनाउंस किया था कि पूरा इकोनॉमी को रीबैलेंस करना है ताकि डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन बढ़ाना है. और ये एक टॉप प्रायोरिटी था चाइना का, और हो नहीं पाया. क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि चाइना के लोग खर्च नहीं करते. आश्चर्य होगा, इनके सेविंग्स रेट सबसे हाईएस्ट सेविंग रेट्स इन द वर्ल्ड है. ये मैं कल या परसों एक वीडियो में मैंने जैसे बोला था आपको कि मेरा मानना ये है कि चाइना का इकोनॉमी कभी वापस नहीं आएगा, कब इनफैक्ट इट विल डिक्लाइन. वो डिक्लाइन कैसे होगा वो मैं एक लंबा चौड़ा मैंने एनालिसिस किया है. वो आई विल डू इट मे बी टुमारो और मे बी नेक्स्ट वीक. वो ऑलमोस्ट तैयार है मेरा, और उसमें बड़ा क्लियर है कि इनका इकोनॉमी दोबारा वापस उभरेगा नहीं जिस दलदल में फंसा है. राइट? सो दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. सो पाथ 4, can China replace non-productive investment with rising trade surplus? Rising trade surplus मतलब export. Another way Beijing could bring debt under control while maintaining high growth rates would be by replacing non-productive investment with a rising trade surplus. While this option is possible in theory, in practice it isn't. और ये इसने लिखा 3-4 साल पहले. ठीक, अभी at this time where the geopolitical situation is completely against China, exports are going down, there's global inflation, this is out of question. But this is a path they can take if they want. They can try to some extent. ये try कर रहे हैं through BRA. ये एशियन कंट्रीज को लुभा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, ये अभी ब्रिक्स में ये ट्राई कर रहे हैं. इनफैक्ट चाइना इज ट्राइंग ऑल पाथ्स because they have to break through somewhere. Going on that old path is not an option. Remaining on the current path is not an option. क्या ये सक्सीड होंगे बाकी 3 पार्ट्स में? ये मैं आगे करूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे. पाथ 5, What happens if China does nothing to replace non-productive investment? यानी कि आप बिल्डिंग बनाना बंद कर दो, ये कनाल बनाना बंद कर दो, रेल लाइंस जो फालतू के हैं वो सब बंद कर दो. राइट. गिवन दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है 40 से 45% तक है, 45% तक ऑफ द जीडीपी इन चाइना. With investment in infrastructure and property accounting for nearly 2/3 of that amount, it is clear that a significant reduction in non-productive investment, if it is not replaced with another equivalent source of growth, must result in a sharp contraction of China's GDP growth. Okay. His back of the envelope
calculation suggests that the upper limit of GDP growth for many years, should that prove to be the case, would be likely to be 2 to 3%. इसका मतलब इनका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर आप रेलवे लाइन नहीं बनाओगे, बिल्डिंग नहीं बनाओगे, प्रॉपर्टी नहीं बनाओगे, रियल एस्टेट नहीं बनाओगे, कंजम्पशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो और आप कुछ नहीं करोगे, और नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो चाइना के अंदर हो रहा है उसको अगर आप निकाल दोगे तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये पॉलिटिकली चाइना को मंजूर नहीं होगा. इनफैक्ट this fifth option is being forced on them. They're being forced to take this fifth option because they have no choice. So they're looking at the second, third, and the fourth options. But where will they break through? We'll see. Okay. In nutshell, what he says, whatever Beijing decides, one way or other, China will be forced to shift from the first path to one or more of the other four paths listed above. Although, because of the size of the Chinese economy, the fourth path, replacing bad investment with surging current account surplus, is extremely implausible. यानी exports खत्म. ये सब लोगों ने लिख दिया तकरीबन 3-4 साल पहले. अभी तो the problem is becoming more संगीन, right? But at the same time, because the first path isn't sustainable, यानी कि अभी कुछ मत करो, ऐसे चलते रहो, it is not sustainable, right? This also means that the other Chinese policymakers will find some way to overcome the historical difficulties associated with the second and third path. Export नहीं हो रहा है, तो they have to go to technology. That's the second path, right? And the consumption, which is the third path. Okay. Or they will be forced eventually onto the fifth path. Because they cannot go in for infrastructure beyond a point. Because it will be wasted infrastructure. Right? They'll be forced, right, onto the fifth path. That's what he says. Historical precedent suggests that the longer it takes for Beijing to make this decision, the more economically difficult and politically disruptive the ultimate adjustment is likely to be. अगर ना किया तो हो सकता है ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे बढ़ता जाएगा तो इसका जो कीमत है बढ़ता जाएगा. Right? That is the fundamental thing, and this is where today's talk on these 5 paths which China's economy can follow ends. I would suggest those of you who are interested to know really about China's economy, go by this. And ये जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, वो उसमें भी ये 5 paths will come. And maybe if I'm ready by tomorrow, I'll talk about it tomorrow. Otherwise, I'll talk about it later. Fine. Now I'll take on questions. Okay. I'll go from the top to bottom. Good